जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी ठीक जी है। सर। जी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं, तब तक आते जाएंगे। सेशन भी एक्सपायर हो जाएगा 2:35 पे। प्रोसेस देखें जी, प्रोसेस टर्मिनेशन हम की तरफ जा रहे थे, तो प्रोसेस टर्मिनेशन हमने प्रोसेस को क्रिएट किया और फिर उसको टर्मिनेट किया। तो process execution last statement and then ask the operating system to delete it using exit system call. So return state data from child to parent via wait. So process resource are deallocated by the operating system. So parent may terminate the execution of a child process using the abort system call. So terminate the execution child process using abort कर सकते हैं आप system call के through. Some reason for doing so, child was exceeded the allocated resources, के child के पास जो हम उसको resources दे रहे हैं वो exceed हो जाए, और तो वो abort हो सकता है. Take assign to a child to no longer require, कि हमें child ही process के लिए no longer require हो, तो तब भी हम उसको निकल सकते हैं. The parent is existing in the operating system does not allow a child to continue if its parents terminates. अगर आपका parent उसका parent process का terminate हो जाएगा तो child को जो है वो continue ही नहीं करेगा, child को allow नहीं करेगा कि वो कर सके, execution की तरफ जा सके. So process आगे जो some operating system do not allow child to exist, or if its parents has a terminated, अगर parents terminated हो गया तो some operating system जो है उसको allow नहीं करेंगे child execution करे. If a process terminates, then all its child must also be terminated. Cascading termination देखें जी, all children, grandchildren and terminated. The terminator is initiated by the operating system. The parent process may wait for termination of a child process by using the wait system call. The call returns status information and the PID of the terminator. PID wait status. If no parents wait till no invoke wait system is called. सो मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर है जी. देखें मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है. मैनी वेब ब्राउजर्स रन ए सिंगल प्रोसेस, some still do. So if one website cause trouble, entire browser can hang or crash. So Google Chrome browser is multi-processor with 3 different types of a process: browser, renderer and plugin. So browser manage user interface, disk and network, etc. So rendered process render web pages, deal with the HTML, JavaScript and new reorder created or each website open. और plugin है process for each type of the plugin, different type of a plugin. आप जैसे आपने कोई पेपर डाउनलोड करने हैं और वो आपको पेड मिल रहे हैं तो उसका एक प्लगइन होता है. इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लगइन आप ब्राउजर के लिए आप ब्राउजर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गूगल उसको अलाउ करता है. सो कोऑपरेटिव प्रोसेस है जी. independent process cannot affect or be affected by the execution or an other process. So independent process है वो affect नहीं होता, ना affected करता है. जो एक और process जो execution हो रहा है तो उसको affect नहीं करेगा. Cooperating process can be affected by the execution of another process. Advantage of process cooperation information sharing हो जाती है, इसके advantage हैं जी. Competition speed up हो जाती है, मॉड्युलैरिटी है, कन्वीनियंस है. सो कोऑपरेटिव प्रोसेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग है जी. इसमें क्या कर सकते हैं, सिंस सेवरल यूजर्स मे बी इंटरेस्टेड इन द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर इंस्टेंस a shared files, we must provide an environment to allow concurrent user to access these types of resources. So computational speed up. If we want to particular task to run faster, we must break it into the subtasks, each of which will be running in the parallel with the others. Such a speed up can be obtained only if the computer has multiple processor elements such as CPU and IO channels. So इसका ये भी एडवांटेज है कि इसकी स्पीड अप हो जाती है, और दूसरा है कि इसकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग वो यूटिलाइज करते हैं. सिंस सेवरल यूजर मे बी इंटरेस्टेड इन द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट. अब समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, एक प्रोसेस रन हो रहा था तो बहुत सारे प्रोसेस उसी सेम टाइप के
इंफॉर्मेशन नीडेड होती है, तो वो इसका ये भी एडवांटेज है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाती है। और दूसरा इसका कंप्यूटेशनली अब बार बार उसको इंफॉर्मेशन लोड अप नहीं करनी, तो वो उसको शेयरिंग में उसको स्पीड अप करने में भी काफ़ी इजी होता है। So modularity है जी, we may want to construct the system in a modular fashion, dividing the system function into a separate process or threads. So convenience है जी, even an individual user may have many tasks on which to work to one time. For instance, a user may be editing, printing, and compiling in a parallel. जी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है जी, पैराडाइम ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन दैट इज कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। सो ये नॉमिनल सा है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा। अनबाउंडेड बफर प्लेस नो प्रैक्टिकल लिमिट on the size of the buffer. So bounded buffer assume that there is a fixed buffer size. इसमें देखें जी, एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर की है कि एम्प्टी पूल है, फुल पूल है, प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है। ये एक सिंपल सा एक कमांड है बाउंडेड बफर शेयर्ड मेमोरी की, कि उसको एक डिफाइन स्ट्रक्ट फंक्शन डिफाइन किया गया और बाउंडेड बफर का साइज डिफाइन किया गया, बट द ओनली यूज बफर साइज वन। सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है जी, process within a system may be independent or cooperative. So cooperative process can affect or be affected by the other process, including sharing data. देखिए process with the system may be independent or cooperative. अगर या तो process independent हो सकता है या cooperative हो सकता है। तो cooperative process can affect or be affected by the other process, including sharing data. So या तो वो affect कर सकता है या किसी पे। देखें रीजन फॉर कोऑपरेटिव प्रोसेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, कंपटीशन स्पीड अप है, मॉडुलैरिटी है, कन्वीनियंस है। ये हम इसको पहले भी डिस्कस कर रहा है कि कोऑपरेटिव प्रोसेस नीड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी है, और टू मॉडल्स ऑफ आईपीसी है, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। देखें जी कम्युनिकेशन मॉडल देखें, मैसेज पासिंग है, शेयर मेमोरी, मैसेज प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी और मैसेज जा रहे हैं, और शेयर्ड मेमोरी में है कि उसमें हमने मेमोरी रखा दिया, शेयर्ड है, और कर्नल है, उसमें कोई भी प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 आ सकता है। और मैसेज में ये है कि मैसेज की क्यू है M1 M2 M3 M सो ऑन। सो मैसेज हर प्रोसेस को एक दूसरे से प्रोसेस से मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। So inter-process communication, shared memory, an area of memory shared among the process that wish to communicate. The communication is under the control of the user process, not the operating system. So an area of memory shared among the process that wish to communicate. The communication is under the control of the user, so process not the operating system. Major issue is to provide a mechanism that will allow the user process to synchronize their action when they access and share memories. So synchronization is discussed in great detail. Synchronization, process synchronization का चैप्टर नंबर 5 में हम उसको देखेंगे कैसे वो उसको मेमोरी को यूटिलाइज करना है, मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, वो प्रोसेस कैसे उसको यूज कर रहा है, ये सारी चीजें हम उसको उसमें देखेंगे। Inter-process communication message passing है जी, mechanism for process to communicate and to synchronize their actions. Message system है, process communication which either the without loading a share memory है. So IPC faculty provides two operations. इसमें है कि sender हो रहा है, receive हो रहा है, और then message size is other fixed or variables.
मैसेज पासिंग है क्या जी? द प्रोसेस P and Q wish to communicate, they need to establish a communicate link between them, exchange message via send and receive. वैसे सेंडिंग और रिसीविंग में यही होता है कि एक मैसेज सेंड कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है, और इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड पे भी एक प्रोसेस की जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक प्रोसेस सेंडिंग होता है और एक रिसीविंग होता है, और वो मैसेज पासिंग के थ्रू होता है। इम्प्लीमेंटेड इशू है क्या जी? हाउ आर लिंक एस्टेब्लिश्ड, कि उनके दरमियान में लिंक कैसे एस्टेब्लिश करना है। कैन लिंक बी एसोसिएटेड विद मोर देन वन टू प्रोसेस, कि एक तो है कि दो प्रोसेस के दरमियान लिंक क्रिएट किया जाए, क्या ये भी पॉसिबल है कि मोर देन टू प्रोसेस भी क्रिएट जाए? हाउ मैनी लिंक्स कैन बी between a pair of communicated process? What is the capacity of the link? If is the size of a message that the link can accommodate fixed or variables? Is a link unidirectional or bidirectional? So implementation of a communication link physical हो सकता है, logical में क्या है जी? physical share memory है, hardware bus है, network है, और logical में है जी direct और indirect और automatic और explicit buffering है जी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन देखते हैं जी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस मस्ट नेम ईच अदर एक्सप्लिसिटली, सेंड हो रहा है मैसेज एंड सेंड मैसेज टू द प्रोसेस, एंड रिसीव क्यू मैसेज एंड रिसीव अ मैसेज फ्रॉम द प्रोसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्युनिकेशन link. So links are established automatically. Link is associated with exactly one pair of a communication process. Between each pair that exists exactly one link, and the link may be unidirectional but is usually bidirectional. So indirect communication में क्या होता है जी? Message are directed and received from the mailbox, also referred to as parts. So each mailbox has a unique ID. A process can communicate only if they shared a mailbox. Properties of communication link. And link established only if the process share a common mailbox. A link may be associated with many processes. Each pair of a process may share several communication links, and link may be unidirectional or bidirectional. Indirect communication क्या है जी? Operations create a new mailbox, send and receive message through mailbox, and destroy a mailbox. So primitive are defined as send a message and send message to the mailbox A, receive a message and receive a message from mailbox A. हम इसको अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। मुझे नजर आ रहा है कि आप सारे सोए हुए हैं, तो इसको हम जो लास्ट वाली 15-20 स्लाइड्स हैं, इसको अगले लेक्चर में हम इन डिटेल सारा डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक, राइट सर। सारे असाइनमेंट करने चले गए हैं तो इस वजह से देख रहा हूँ कोई भी सुन नहीं रहा। सर हम सुन रहे थे। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, देखें जी, मेल बॉक्स शेयरिंग है। इसमें देखें प्रोसेस 1, 2 and 3 शेयर्ड मेल बॉक्स है। P1 सेंड्स है, P2 है और P3 रिसीव्स है। हु गेट्स द मैसेज? सो solution: allow a link to be associated with the most of the two process. Allow only one process at a time to execute a receive operations. So allow the system to select arbitrary the receivers, and sender is notified who the receiver was. So synchronization and message passing may be either blocking or non-blocking. Blocking is considered synchronization, and blocking sends the block until the message is received, and blocking receive, the receiver is blocked until a message is available. Non-blocking is considered